Welcome back. So, a question that is being asked to me is that since I'm predicting a global recession in 2023, whether India will also be hit by a recession. Friends, it's a very good question that you all are asking me. Take it from me, global recession 100% in 2023. Now, come to India. See, Indian situation is a little different. The amount of effort that is being put by the current government, the BJP government, on infrastructure development, on roads construction, is tremendous. We also have a lot of other work going on, temples being constructed, Ram Janmabhoomi temple. You go to a place like Haridwar, it's an economy by itself. There is business going on 12 months in a year. It's also a religious destination, so don't catch my word business. But I'm just saying is that people who come there for religious offerings, for pujas, then they are buying a lot of things from there as well. Just try and have a little glimpse of that city. You will realize how India is a very good domestic economy. And there is not this just Haridwar. You go to so many places across the country. So you have there's a religious pilgrimage, and people are traveling across. Then when they go there, then they buy things for from the places which they are visiting, the religious places. They're buying a lot of business accompanying and things like that, which they keep. The whole city, the whole country is brimming with activity. And to top it off, as I said, the great amount of infrastructure development which is in place will really not put it in the same sphere as the overseas countries. Yes, there will be, but there will be one problem. A lot of the tech exports, the software exports going to the United States, UK, if these countries get into recession, which I always stick my head out. I don't say if, no, I always say that. And that's why I get a lot of flack also from people, because I always speak something which is bitter truth. So when these countries get impacted by recession, you take it from me, India will also get impacted. But it will be less, because the situation is a little different. We have infrastructure development. There's a lot of expenditure on education, on various other things which are a domestic economy. There is a lot of vibrant domestic economy which is self-serving. So you go to religious sites, you visit them, then you buy things from the house for so many things. Okay, that will never stop. But yes, look at the chain effect. If the IT exports slow down, right, then the revenues from the dollar revenues will also slow down. So there may be loss of jobs in that sector, as a result of which the pressure on the currency will be there. I hope not. I hope the Modi government does something to correct that, because I think 83 is a lot already. So pressure will be there too. On the currency front, there will also be other pressures on the Indian economy, as people lose their jobs. So if the IT businesses are facing headwinds, then they will also in turn buy less from other sectors, from other industries, right? There will be less construction for the IT sector. So the construction activity pertaining to IT will start coming to a standstill. So the demand for metals, for various other products, which also will also start slowing down. So all these various sectors and the companies and the industries in these sectors will also get impacted. So there will be it's like a vicious circle. They will all start getting impacted. So be cautious. Don't think that
just because it's a domestic economy, it's a local economy, it's a consumer economy, but a lot of the buying and the selling takes place within the sphere, within the country itself. That itself does not mean that it will not face global headwinds. Global headwinds, when they come, they impact every country in every corner of the earth. More importantly, I would say that what about the stock market? Stock market FIIs, when they withdraw money, they will withdraw from everywhere. Okay, so the impact will be equally there. Last year we had in 2022 we had India outperform the world, the rest of the world, but 23, I think the impact will also be in India, because what happens is when the FIIs initially may try to remain in the countries which are still least impacted on a GDP basis, on a weighted average GDP basis, they may try to remain in the countries which are least impacted. India may be that. But what happens is when you suffer losses in one country, then you try to make up for that loss by withdrawing from other countries where you're more in profits. And actually they have made good money in India in the last year. So India will be among the forefront where they may want to also withdraw their profits. So this may lead to some turbulence in the Indian stock markets, and they may also get impacted. Okay, so be careful. If you are investing in the mutual funds, you have the SIPs, you got a good salary check, you are into all this investments in the SIPs and all that, do remember that when the fall comes, you will also be impacted very badly. Your portfolio will also be quite badly impacted. So don't take a chance. Remember, I told you SIP is not a good method of investment. DCA, dollar cost averaging, is also not a good method of investment. Try to find the bottom. We are going here to professionally find and give it to you, and use that opportunity to enter. And don't keep hanging around in your portfolio where it is not needed to, especially when there are such strong global headwinds which are accumulating and gathering pace and momentum. And to get to know more, please do join Premium Plus if you would like to know for the Indian markets. And for the US markets, you can join Prime Plus. The number to get in touch 9820861044. तो भाई और बहनों, पूछा जा रहा है कि क्या भारत को भी ग्लोबल रिसेशन, आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि ग्लोबल रिसेशन पक्का 2023 में तो भारत को भी इम्पैक्ट आएगा. देखिए यहाँ पे काफ़ी सिचुएशन थोड़ा अलग है. लास्ट ईयर भी आपने देखा काफ़ी अच्छा आउट परफॉर्म किया भारत ने विश्व को. तो अब पूछा जा रहा है कि अब कैसा होगा, अब क्या होगा आगे चल के. अब भी वैसा ही होगा कि आउट परफॉर्म. तो देखिए रिसेशन तो आ रहा है, अनिवार्य है. भारत को कम इम्पैक्ट आएगा. यहाँ पे इतना सारा अर्थव्यवस्था को बनाया जा रहा है, इतने सारे बीजेपी गवर्नमेंट इतने अच्छे स्टेप्स ले रही है, रोड्स कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वगैरह. तो गडकरी साहब इतनी मेहनत कर रहे हैं, मोदी साहब तो बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं इस फील्ड में. वहाँ पे राम जन्मभूमि बन रहा है, बहुत सारे नए मंदिर बन रहे हैं. तो ये काम तो चलते रहेगा. डोमेस्टिक इकोनॉमी है. देखिए यहाँ पे दो, जैसे आप हरिद्वार गए, यहाँ और किसी रिलीजियस साइट्स, रिलीजियस तो जाते ही रहेंगे लोग. वहाँ जाते हैं तो फिर और चीज़ें उनकी खरीदते हैं. वहाँ पे क्या अवेलेबल है, शॉल लेंगे, ये लेंगे, कपड़े उठा देंगे. तो ये तो मार्केट जो है एक इंटरनल मार्केट है. एक तरह से कहे कि ओपन इकोनॉमी भी है और एक तरह से क्लोज्ड इकोनॉमी भी है. तो ज़बरदस्त यहाँ तो इकोनॉमी को इतना जल्दी गिरना पॉसिबल नहीं है. इम्पैक्ट तो आएगा. जैसे आईटी कंपनीज हैं, उनके ऑर्डर्स कम हो जाएंगे. अगर यूएस और यूके को रिसेशन का सामना करना पड़ रहा है तो आईटी कंपनीज को तो ज़रूर इम्पैक्ट आएगा, अनिवार्य है. लेकिन इनका जो इम्पैक्ट है वो क्या होगा कि फिर ये खुद अपने टर्म में खरीदना कम करेंगे. जैसे कि वो जो नई बिल्डिंगें बनाना, नए इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना, नए ऑर्डर्स को बनाना, कैपेक्स कम हो जाएगा. जब कैपेक्स कम होगा तो डिमांड फॉर मेटल्स, वो वगैरह चीज़ें जो होती है वो कम होती जाएंगी. लेकिन लोग खाना पीना खाते रहेंगे. इतनी बड़ी इकोनॉमी है,
ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन आईटी सेक्टर का जो इम्पैक्ट आएगा वहाँ पे हो सकता है कुछ जॉब लॉसेस हो गए तो वहाँ पे काफ़ी अच्छे लोगों को पगारें मिलती है आईटी सेक्टर में, तो वो फिर इन टर्न क्या करेंगे, कंजम्पशन को, कुछ डिस्क्रिशनरी एक्सपेंडिचर को कम कर देंगे, ठीक है, जिसको पोस्टपोन कर सकते हैं करेंगे। तो ये सारा इम्पैक्ट इनके रिसेशन का जो ग्लोबली होने वाला है वो भारत पे भी आएगा। अब प्रश्न ये है कि इसके स्टॉक मार्केट पे क्या होगा। इस वर्ष में 2022 में तो बहुत ज़बरदस्त आउट परफॉर्म किया है इंडिया ने, लेकिन अभी मेरे ख्याल से एफआईआईज को यहाँ से भी निकालना पड़ेगा पैसे, क्योंकि क्या होता है जब आपको दूसरी कंट्रीज़ में दिक्कत आ रही है, वहाँ पे लॉसेस आप फेस कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप जाके वहाँ से निकालेंगे जहाँ पे, ठीक है, आप जैसे अमेरिका है या यूके जहाँ है वहाँ ज़्यादा लॉस हो रहा है तो पहले वहाँ करेंगे, लेकिन वो लॉस को रिकूप करने के लिए फिर आप उन कंट्रीज़ में भी जाएंगे जहाँ आप प्रॉफिट्स में है। इस वक्त एफआईआईज बहुत प्रॉफिट में है इंडिया में, तो थोड़ा फिर इम्पैक्ट यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी सेलिंग होगी, उसका जो है इम्पैक्ट आपके आमदनी पे भी पड़ेगा, आपके रुपए के ऊपर भी उसकी मूलधन में भी प्रेशर आएगा, क्योंकि लोगों को उतना सारा वो डॉलर्स है वो ले जाएंगे, ठीक है। तो ये मोदी साहब के लिए बहुत ही कठिन वर्ष होगा, क्योंकि ये करेंसी को भी संभालना होगा और अर्थव्यवस्था के ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट आ सकता है इसका, ठीक है। तो रिसेशन आएगा यहाँ पे कम, भारत में तो मेरे हिसाब से कम ही रहेगा, लेकिन ज़रूर आएगा ग्लोबल रिसेशन का इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर भी आएगा, ठीक है। और यहाँ के स्टॉक मार्केट्स जो है इंडिया के, उसको भी इम्पैक्ट ज़रूर करेगा। आप जो सिप मेथड जो कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स में अपनी सैलरीज अच्छी हैं लोग डाल रहे हैं, बहुत परेशान होगा। सिप एक्चुअली बहुत ही गलत मेथड है इन्वेस्टमेंट का, डीसीए का, सिप का ये गलत है, बिल्कुल ना करिए। बॉटम लेके अच्छा करिए, बॉटम आपको ला के देंगे हम, कहाँ आएगा। और संपर्क करेंगे, प्रीमियम प्लस ज्वाइन करिए अगर आप इंडिया मार्केट के बारे में जानना चाहते हैं और यूएस मार्केट के बारे में जानना चाहते हैं, तो प्राइम प्लस ज्वाइन करें। संपर्क करने का नंबर 9820861044। खुश रहिए, नमस्ते।